Hello student, in the previous session we have already discussed on solenoid and the force acting on a current carrying conductor placed in uniform magnetic field. Now a question arises, how can you determine the poles of a current carrying solenoid. ठीक है, एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड की पोल्स जो है हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? तो इसका सॉल्यूशन है, वी कैन डिटरमाइन the poles of a solenoid carrying current in two ways. ठीक है, दो तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं. सबसे पहला, hangs the current carrying solenoid hangs freely the solenoid carrying current and turn it. When it comes to rest, it always be aligned in north-south direction. The end of the solenoid directed towards the geographical north direction bears the north pole and the end directed towards geographical south bears south pole. ठीक है, यानी यदि सोलेनॉइड को हम जो है हैंग कर दें फ्रीली और एक बार रोटेट करके छोड़ दें, तो जब यह रेस्ट में आएगा तो हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा में आकर स्थिर होगा. जो सिरा सोलेनॉइड का उत्तर दिशा की ओर है, भौगोलिक दिशा उत्तर दिशा, उस सिरे पर नॉर्थ पोल होगा और जो सिरा साउथ दिशा में यानी ज्योग्राफिकल साउथ में होगा उस सिरे पर साउथ पोल होगा. तो इस तरह से पहला तरीका है डिटरमाइन करने का. दूसरा तरीका क्या है? The face of solenoid facing to you. The
face of solenoid carrying current facing to you if the current flowing in clockwise direction, ठीक है, then that phase possesses साउथ पोल, उस पर क्या होगा, साउथ पोल होगा. The face of solenoid carrying current facing to you if the current flowing in anti-clockwise direction, then that phase possesses the नॉर्थ पोल. कैसे बियर होगा, तो वह नॉर्थ पोल होगा. We can see here how it looks. Suppose that this is the यदि इसमें करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगी, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यह जो है साउथ पोल होगा. और यदि करंट इज फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में, तो यह नॉर्थ पोल. This is the coil, the face of the coil, that is the loop. If in this phase the current is flowing clockwise direction, then this phase bears the south pole, and the phase in which the current is flowing anti-clockwise bears the north pole. This is the two way by which we can determine the poles of a solenoid. Clear? Now what are the factors? What are the factors affect the force acting on a current carrying conductor placed in uniform magnetic field. ठीक है, वे कौन कौन से फैक्टर हैं, ठीक है, जो उस
करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसे हम जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर जो फोर्स लगता है उस फोर्स को यह प्रभावित करता है। वे कौन कौन से फैक्टर है? तो वी कैन सी हियर, सॉल्यूशन इसका क्या है? देयर आर थ्री फैक्टर्स, देयर आर थ्री फैक्टर्स, three factors on which the force acting on a current carrying conductor placed in uniform magnetic field depend। ठीक है, वे कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो देखें, सबसे जो पहला फैक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। जो दूसरा फैक्टर है, सेकंड फैक्टर, इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एंड द थर्ड फैक्टर इज length of current carrying conductor। ये तीन फैक्टर है। if I बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, magnitude of current, B strength of magnetic field, strength of magnetic field, L is the length of conductor, then F is the force acts on conductor. Then we can give a relation F is equal to BIL. This is the relation. That means the force acting on the conductor is directly proportional to the strength of magnetic field. The force acting on the conductor is directly proportional to the magnitude of the current in the conductor. F is directly proportional to the length of conductor carrying current। यानी ये तीन चीजों पर ही निर्भर करता है। क्लियर? तो हम लिख सकते हैं the force acting on conductor is directly proportional to the magnitude of current। ठीक है, इसी तरह हम लिख सकते हैं द फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
to the strength of magnetic field. Strength of magnetic field. ठीक है. इसी तरह the force acting on conductor is directly proportional to the length of conductor carrying current. ठीक है. ये चीजें जो है, इज इट क्लियर? यह जो है तीन बातों पर निर्भर करता है. जो दैट मीन्स if we increase the magnitude of the current, the force acting on the current carrying conductor is also increased. That means the motion set up in the conductor increase. If we increase the strength of magnetic field by using the high strength magnet, in this case the speed of the current carrying conductor, that is the motion, is also increased. Similarly, if we increase the length of conductor, it force acting on it is also increases. Is it clear? Now in which position the current carrying conductor placed in the uniform magnetic field so that it experiences the maximum force? In which position? In which position the current carrying conductor be placed in an uniform magnetic field so that it experiences the maximum force. Maximum force किस रूप में रखा जाए? क्लियर? यदि ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो we have to place the current carrying conductor in such a way the direction of the current should be perpendicular to the direction of magnetic field. Clear? Solution: the current carrying conductor placed in uniform magnetic field यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, मैग्नेटिक फील्ड इन सच ए वे, इस प्रकार से, दैट डायरेक्शन ऑफ द करंट should perpendicular to the direction of magnetic field. ठीक है?
ये क्वेश्चन में मैक्सिमम फोर्स और यहां एक ऐड कर देते हैं एंड मिनिमम फोर्स, मिनिमम फोर्स किस पोजीशन में रखा जाए। तो पहला, इट एक्सपीरियंस द मैक्सिमम फोर्स, है ना। Current carrying conductor placed in uniform magnetic field in such a way the direction of the current should be perpendicular to the direction of magnetic field, then it experience the maximum force. Similarly, if the current carrying conductor, if the current carrying conductor placed in uniform magnetic field in such a way that the direction of current should parallel to the direction of magnetic field, then it experiences minimum force. That is the zero. Is clear? तो इस तरह हम देखें, यदि यह डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है और करंट कैरिंग कंडक्टर हम इस हिसाब से डायरेक्शन ये बी है और ये आई है, दोनों इसके पैरेलल हो जाए, तो वैसी दशा में यह फोर्स एफ बराबर मैक्सिमम होता है, एफ बराबर मैक्सिमम और एफ बराबर मिनिमम होगा। इट क्लियर? ये दो स्थिति में इट क्लियर। नाउ we have a question. A beam of electron directed perpendicular to the direction of uniform magnetic field, then find the direction of force or the direction in which the इलेक्ट्रॉन बीम गेट डिफ्लेक्टेड। कहता है कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन बीम छोड़ा जाता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, or the beam of the electron, or the direction in which the electrons get deflected. So we can apply the left hand rule. हम क्या करें? Left hand rule. The middle finger represent the direction of the current, forefinger represent the direction of magnetic field, and the thumb represent the direction of the force. So this is the, we take the current, direction of the current opposite to the direction of flow of electron.
So direction of the electron is this. So the direction of the I is upward. So we can see here. Is it clear? That means down to the plane of the board. What will be the direction? Down with the, है ना, फोर्स क्या होगा? डाउन, F डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बराबर डाउन टू दी प्लेन, या प्लेन है या बोर्ड है या पेपर है, तो ठीक उसमें या डाउनवर्ड होगा. ठीक है, यही इसकी डायरेक्शन डाउन. Many of the question similar type you have to face, and each time you have carefully apply the left hand rule to find the direction of motion or the direction of the force acting on the conductor. Is clear? I hope. So many questions related to it is given to your book. You will try to solve it. If you have any problem, then you contact me. Thanks.